All right, multiplicity of polynomial function. Well, we all know the end behavior of a polynomial function, and what I want to again recall is that whatever the, if this is the polynomial, अगर ये polynomial है, तो इसका इस polynomial का end behavior it always matches with the end behavior of y equal to a x to the power n. ये जो पॉलिनोमियल है इसका एंड बिहेवियर और इस पॉलिनोमियल का, इस फंक्शन का एंड बिहेवियर इज द सेम, because the end behavior always decides, the end behavior is always uh, decided based on the highest degree of the polynomial. Exactly. And as you can see, this is the leading term in this, sorry, this particular thing is the leading term which is equal to this kind of equation. So yeah, that is why the end behavior is same for both of the equations or both of the functions. Now, well, enough of this end behavior. अगर मैं बात करता हूँ, we know how to draw end behavior by plotting the endpoints. But what about the middle part? हमें वो सीखना है ना. And multiplicity of the polynomial function is where we look for the answers for graphing the middle part. Well, roughly, I'm not speaking about the specific graph, because specific graph के लिए आपको plotting करना होगा properly, and then you'll have to go with the traditional method or use the graphing calculator. Well, I'm not suggesting or promoting graphing calculator, so but anyways, so वो तरीका हो गया अगर आपको प्रॉपरली ग्राफ करना है. बट इफ यू वांट टू ड्रॉ रफली, इफ यू वांट टू ग्राफ रफली, जगह की जगह पे अगर आपको बताने का है कि दिस इज द वे द फंक्शन बिहेव्स, वेल ओके, देन you do it based on the end behavior and multiplicity. Now end behavior पता है, multiplicity क्या है? Well, अगर कोई भी polynomial पढ़ रहा है तो उस बच्चे को multiplicity पता होना चाहिए, multiplicity of zero पता होना चाहिए. multiplicity of polynomial है, इसका मतलब ये है कि multiplicity of zero या multiplicity of zeros of the polynomial या zero की multiplicity क्या है, that is what we are talking about. So when I speak about multiplicity of polynomial function, I am speaking specifically about a zero, that is zero. इसका मतलब हो गया कि the root which is repeating itself for a several number of time or several amount of time. अगर कोई zero खुद को number of times repeat करता है, then we call that a multiplicity. So let's see, if I have x minus 1 whole square, then in such case the root is x equal to 1, but the multiplicity is 2 because 1 is repeating itself twice. This is the quadratic equation. Quadratic equation की वजह से it's repeating itself. If I have let's say x minus 1 whole cube, then in such case again the root is 1, but the multiplicity over here is 3. So if I have let's say a function where it is factored in such a way that it has a factor x cube, x minus 1 whole square and x plus 2, then in such case इसके roots है x equal to 0, x minus 1 equal to 0 and x plus 2 equal to 0, wherein the multiplicity of each root is 3, 2 and 1. Each factor has their own multiplicity. That is what I want to say. Multiplicity factor के basis पे से define हो गई है. क्यों? क्योंकि this is the one which decides the root. The factor decides, or the factor gives us the root. और factor की जो power है उतना number of times वो root उतना repeat हो रहा है. क्यों? क्योंकि that is the way of getting the answer, that is the number of ways that you will get the answer equal to 0. So यहाँ पे x cube था तो ये 0, x equal to 0 is repeating itself thrice. x minus 1 था तो x is repeating itself, oh यहाँ पे I can let's say, yeah, I can rewrite this as x equal to 1 and I can rewrite this as x equal to minus 2. ऑल राइट, सो द मल्टीप्लिसिटी का डेफिनेशन क्या हो गया एक जनरल सेंस में, आगे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे. मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए जीरो इज नथिंग बट जीरो विच इज बीइंग रिपीटेड फॉर नंबर ऑफ टाइम्स.
एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लिसिटी इज 3, 2 एंड 1. नाउ द क्वेश्चन इज इन मैथमेटिक्स अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लिसिटी हमको सिर्फ इसी चीज के लिए पढ़ने को नहीं कहा गया कि वेल यू हैव मल्टीप्लिसिटी, इसका मतलब कि ये इतने दफा खुद को रिपीट करेगा, यानी कि अगर मल्टीप्लिसिटी अगर 3 है तो वो खुद को 3 बार रिपीट करेगा, 2 है तो 2 बार रिपीट करेगा, 1 है तो 1 बार रिपीट करेगा. बट द थिंग इज दैट व्हेन यू कम इनटू मैथमेटिक्स you have to extend your limits. At some point you extend your limits. So few mathematicians back then extended the limit of multiplicity when they saw some pattern in them. Pattern was कि अगर मैं graphically approach करूँ तो if I have the multiplicity of this kind, which is to say odd number of multiplicity, what happens graphically? And if I have the even multiplicity, then what happens graphically? So the question is not just the multiplicity tells us about the number of times a root is being repeated. The answer I mean the extended version of multiplicity is that it tells us whether it will cross the x-axis, let's say for this graph it will touch and rebound, for this graph इट्स ए क्यूबिक तो वो खुद को ऐसा कुछ बढ़ा देगा, आई डो नॉट नो, वो खुद को ऐसा बढ़ा देगा, लेट मी जस्ट ऐसा कर देगा, आई डो नॉट नो एग्जैक्टली कैसा आएगा, बट ऐसा कुछ ग्राफ आएगा जिसमें वो क्रॉस कर रहा है. यू कैन सी इट्स क्रॉसिंग, इट्स टचिंग एंड रिबाउंडिंग. सो द थिंग इज दैट यू नीड टू ऑब्जर्व थिंग्स. अगर ऑड है तो इट्स ऑलवेज क्रॉसिंग, अगर इवन है तो इट्स टचिंग एंड रिबाउंडिंग. सो अगर मल्टीप्लिसिटी इवन आ रही है, कोई जीरो की, देन इट विल ऑलवेज टच एंड रिबाउंड. अगर मल्टीप्लिसिटी ऑड आ रही है तो इट विल ऑलवेज क्रॉस द एक्स एक्सिस. That is what the multiplicity of polynomial function tells us about. Multiplicity of 0 is nothing but you need to find out how many times the 0 is being repeated. और 0 को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. That is not the concern right now. The concern is how to draw graph of polynomial roughly. Sketch अगर कैसा निकालना है वो हमें सीखना है fastly. तो we need to understand two things. The first was end behavior. The second is multiplicity. And to understand multiplicity, we need to understand the middle part में क्या हो रहा है, क्योंकि द एंड, ये तो एंड पार्ट का हिस्सा है, दैट इज द एंड बिहेवियर. सो मिडल में अगर हो रहा है कुछ, तो एक तो मिडल में एक चीज हो रही है कि वो टच करके वापस ऊपर जा रही है, या तो वो क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को, या तो इट्स क्रॉसिंग एक्स एक्सिस. Okay, I do not know that's correct spelling or not. Anyways, so it's crossing the x-axis. So that is the rule of multiplicity of a polynomial function. Now let's discuss in general sense. First, the polynomial multiplicity का definition क्या होता है. So suppose f is a polynomial function and m is the natural number. कोई भी natural number है m, and x minus c to the power m is a factor of f of x. Well, this is good कि x minus c to the power m is a factor of f of x, but x minus c to the power m plus 1 is not the factor. That has to be kept in mind. और ये क्यों होता है ऐसा, you tell me in comment section. अगर नहीं है तो just ask me in comment. I'll make a video on this also. But it's simple. You can figure it out. अगर ऐसा है कि x minus c to the power m is a factor and x minus c to the power m plus 1 is not, then we can say that c is a zero. Then we can say that c is a zero of multiplicity m. तभी मैं बोल सकता हूँ कि इसकी multiplicity m है. It all depends on factor. Now comes the extended part of the multiplicity, and that is the rule of multiplicity. अगर let's say suppose f is a polynomial function and x equal to c is a zero of multiplicity m, then if m is even, यानी कि multiplicity अगर even हो गई, so I'll just take another example again I'll just take another example. ठीक है, अगर मल्टीप्लिसिटी इवन हो गई तो वो क्या बोलते हैं कि इट विल टच एंड रिबाउंड फ्रॉम द एक्स एक्सिस एट c, 0. So let's say this is my c, so it will touch and rebound. And if the multiplicity is odd, that is m is odd, then it will crosses through x axis at c, 0. So let's say ये ऐसा ग्राफ आ गया, not exactly ऐसा, let's say ये ऐसा ग्राफ आ गया. सो इफ इन सच केस दिस हैपेंस, तो ये जो रूट्स है, दिस रूट ओवर हियर, दिस रूट पर्टिकुलरली ओवर हियर और दिस रूट, इनमें क्या है, इनमें मल्टीप्लिसिटीज है.
यहाँ पे ऑड मल्टीप्लिसिटी आएगी, यहाँ पे ऑड मल्टीप्लिसिटी आएगी। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीप्लिसिटी के टाइम पे इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, जो कि हो रहा है। एंड यहाँ पे आएगी इवन, यहाँ पे आएगी इवन। क्यों? क्योंकि इवन पे टचेस एंड रिबाउंड। अब रीजन क्यों है इसका, वो यहाँ पे देखो, छोटे एग्जाम्पल। हमेशा यू ट्राई टू गिव योर सेल्फ रीजन बेस्ड ऑन द स्मॉल एग्जाम्पल्स। हमने एंड बिहेवियर भी स्मॉल फंक्शन से सीखा। एग्जैक्टली मैंने बड़े फंक्शंस नहीं लिए, मैंने बेसिक फंक्शंस लिए, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, और इनके जैसे इवन और इनके जैसे ऑड फंक्शन, और उसके बेसिस पे से हमने कंक्लूजन निकाला था, और वो सही भी है। सो सिमिलरली यू जस्ट कंसिडर दिस एग्जाम्पल एंड जस्ट सी ग्राफिकली क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। द रीजन इज मल्टीप्लिसिटी, द रीजन इज मल्टीप्लिसिटी। सो हमारा हमेशा मकसद ये है मैथ्स में, मेरा द मैथ्स प्रोजेक्ट टेल्स अस दैट द मैथ्स प्रोजेक्ट इज बिकॉज इट is the question why we should always ask this why, exactly we should always ask। और why का मैंने आंसर दिया है यहाँ पे कि मल्टीप्लिसिटी। now let's do this example and we will be done with this। x cube, x minus 3 whole square and x plus 2। so if I want to graph this, so let's see ग्राफिकली वो मेरे से जमेगा क्या। उप्स, और बाप रे, नहीं, आई कैन नॉट रिस्क सो मच। हाँ, सो मैं सो इफ दिस इज द ग्राफ, इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे इट क्रॉसेस वो ऑड मल्टीप्लिसिटी, और जहां जहां पे इट्स रिबाउंडिंग इट्स इवन मल्टीप्लिसिटी। और वो सच है, क्यों? क्योंकि एक रूट है x माइनस 2, दैट हैज टू बी दिस, एग्जैक्टली। एक है x इक्वल टू 0, दैट हैज टू बी दिस, exactly, and एक है x equal to 3, that has to be this। and from every root you can see that the crossing and rebounding takes place because of multiplicities, and this is why it is so important to understand the multiplicity, and multiplicity के through हम समझते हैं rule of multiplicity। so not just everything you study in maths is upra upri, but deep inside there are rules and other properties for few or the other concepts, many concepts basically। and this was all about the multiplicity, and in next we will understand, now in the next we will graph based on the factors and multiplicities and n behaviors only and only। so that's it for today।